मैं चंडीगढ़ आई थिंक आफ्टर 6 months आई हाँ विच में आई सी मिस रीवा का जितने वास्ते बट एक दिन लिए आई सी तो फाइनली इस क्राउन के नाल पहली बार एक क्राउन इतने चंडीगढ़ आया है सो आई एम सो हैप्पी टू मीट माई फैमिली तो सारे ने मिल के मैंने बहुत खुशी हुई तो हुणे मैं CM सर मिस्टर भगवंत मान नू भी मिल के आई हाँ तो उन्होंने भी मिल के मैंने बहुत चंगा लगा Okay. Well, okay. आई थिंक शब्दों में कभी कभी बयान करना मुश्किल हो जाएगा कि मेरे ज़िंदगी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है क्योंकि जो वो एक्सपीरियंस से जाता है उसको ही पता है वो कैसा महसूस करता है उससे क्या सीखता है पर मेरी फैमिली ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है सो आई थिंक उन्होंने मुझे हमेशा शेरनी बनाकर रखा है तभी मैं आई थिंक आप सब मुझे शेरनी बुलाते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है सो कभी भी जैसे मुश्किल घड़ी जब मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी तो गिव अप नहीं किया मैंने ये सोच के कि ये ही मेरी ज़िंदगी की एंड है और इसके आगे कुछ नहीं हो सकता क्या होगा बॉस गिर जाऊंगी मैं फेल हो जाऊंगी बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ सो ऐसे ही आगे बढ़ती रही और आप सबके प्यार के साथ और दुआओं के साथ चक दिए फटे बॉलीवुड वेल दैट्स अ गुड क्वेश्चन बट ऑनेस्टली अभी जीती हूँ यार देखो 21 सालों के बाद इंडिया जीता है सो आई एम फोकसिंग ऑन बीइंग द स्पोक्स पर्सन ऑफ मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड माई एडवोकेसी अबाउट मेंस्ट्रुअल इक्विटी तो उसके लिए अभी मेरा फोकस वही है तो रेन के बाद लेट्स सी आपको पता ही होगा इसका जवाब तभी आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है सर बट द ओनली थिंग इज दैट अभी तक मैंने नहीं देखा क्योंकि आई थिंक जब ये रिलीज़ हुई उस टाइम पे मैं न्यूयॉर्क से मुंबई आई और तब से मैं अपनी होम कमिंग में आप सबको खुश देखकर मैं इतना बिजी हूँ कि मैं कश्मीर फाइल्स के बारे में अभी मैं कुछ नहीं देखा मैंने सो मैं उसके बारे में अभी कुछ बोलूँगी तो इट वोंट बी वर्थ हाँ जी आई थिंक इट वॉज अ ड्रीम कम मोमेंट फॉर मी उन्होंने मिल के मैं सर दी बहुत वड्डी फैन है एज एन आर्टिस्ट आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट टू बट एट द सेम टाइम उन्होंने विजन देखे तो वो की बदलाव चाहते ने एंड यू नो अबाउट पंजाब along with so many other things like जे मैं अपनी गल करा जिदा मेरा फोकस इज अबाउट women empowerment and menstrual equity right so उन्होंने किदा दसिया कि किदा मतलब कितना कुछ वो पहला ही बदलाव लेके आ चुके हैं आई थिंक इट्स ओनली बीन 12 days and he's ready for the change and I was just telling him that the youth of our country the youth of our state is all ready to change they just want the right icon the youth icon to make it like हाँ असी डायरेक्शन देवांगे थानू सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं भी उन्हों का साथ किदा दे सका एंड इस सोसाइटी नू इस कंट्री नू असी किदा हेल्पफुल कर सकीए तो आई थिंक वो लिए सानू सारे दी हेल्प की जरूरत है सपोर्ट की जरूरत है सो इट वॉज a beautiful and informative meeting with him. आई थिंक पर्सनली जो कि होंगे है कि थानू कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है इस तो बाद मैनू तो बहुत मिला कॉन्फिडेंस मेरी विजन क्लीयर होगी आई थिंक जिस चीज़ बारे में कदों की मेहनत कर रही थी मैनू फाइनली दिखा कि इट्स हैपनिंग ऑफकोर्स मैनू कंट्रीज घूमने का बहुत मौका मिल रहा है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड इन अपकमिंग मंथ्स आई एम ट्राइंग टू गो टू एज मैनी कंट्रीज विद अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड टू लर्न फ्रॉम दैट कल्चर दैट कंट्री shoots हो रहे हैं काफ़ी sponsors, magazines, a lot of meetings. I got to meet the great organization like Global Citizen and होर भी काफ़ी लोगों ने मैं मिली उन्हें तो कितना कुछ सीखा मैं and बहुत कुछ हो रहा है actually. So मैं तानू आई कहूँगी तुसी मेरी जर्नी में फॉलो करो that would be ज़्यादा तानू वधिया लगेगा देख के जो मैं शब्द जी कहूँगी शायद तुम इन्ना लगे एक्साइटिंग ना लगे सो यू हैव टू जस्ट कॉन्स्टेंटली वॉच हरनाज़ जर्नी एज मिस यूनिवर्स
Hello. And I host this show from 11 to 2 and it's a women-centric show, पूरी online. So जैसा कि अभी आपने बताया that women empowerment, आप उसके बारे में बात करती हैं. So I want to ask you, like in every girl's life there has to be a moment, जो एक breakthrough moment आता है. So what was that in your life and what do you want to say to other girls? I think it was many, and I'm sure it's many with everyone. We have different struggles. We have different lifestyles. We have different bodies and mindsets. But हमारा विजन एक ही होती है कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं इम्पैक्टफुल अपने लिए और सोसाइटी के लिए. सो मेरे लिए आई थिंक प्री टीन्स में स्टार्ट हो गया था व्हेन आई वाज बुलीड द वे आई यूज्ड टू लुक बीइंग टू थिन. एंड आई थिंक जब मैं मिस इंडिया में थी 2019 में, मैं सिर्फ 19 साल की थी और मुझे स्टेज पे एक क्वेश्चन पूछा था और मुझे जवाब नहीं देना आया उस टाइम पे. सो मेरे अंदर एक आग जली कि मैंने अपने आप को अपने आप से प्रूव करना है कि आई वॉज रॉन्ग, कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस और आर्टिकुलेट करने के लिए. सो जब मैं इस बार आई मिस टीवा के लिए, मैं ये सोच के नहीं आई कि मैं जीतना चाहती हूँ, ना ही मिस यूनिवर्स में. मैं ये सोच के आई कि आई एम माई ओन कॉम्पिटिशन और मैंने अपने आप से जीतना है और अपने आप को हराना है कि नहीं. वो हरनाज चेंज हो चुकी है, उसने अपने फेलियर से सीखा है, वो आगे बढ़ चुकी है. और जब तक मैं अपने आप एम्पावर्ड नहीं फील करूँगी तो मैं लोगों को कैसे एम्पावर्ड फील कराऊँ. सो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. हाँ जी, सत श्री अकाल सर. बिल्कुल. आई थिंक पंजाब ਵਿੱਚ एक बहुत ਵੱਡੀ प्रॉब्लम है ड्रग्स बारे. ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂसेस ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ. ਸੋ ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਾਂ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ. ਸੋ really looking forward to that. Thank you. I think you have been waiting. Yes. Oh my God. I'm so happy you asked me that question. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ I knew it. Because that's the stigma. That's a stigma in our minds. I mean, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੋ, but ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ. I mean, I'm one of those individuals ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਟੀ ਆ. Like, nobody knows about my celiac disease ਕਿ ਮੈਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ. ਐਂਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. You know, it's because I am a person who believes in body positivity. And one of the Miss Universes for the very first time is going through that. And we at the platform of Miss Universe talk about women empowerment, womanhood, and body positivity. And if I am going through that, I know there are a lot of people who are trolling me, and it's okay because that's their mindset, their stigmas. But there are a lot of other individuals who are trolled every day, irrespective of if they are Miss Universes or not. And I think I am empowering them by making them feel that if I feel gorgeous, you are beautiful too. It's in our minds how we perceive beauty. For me, everyone is beautiful. It's about how you represent yourself and what kind of ideology you have. Your features does not matter at one moment. And trust me, if you think that I'm the most beautiful girl, that's why I won Miss Universe, I'm sorry, you're wrong. I might not be the most beautiful, but I might be the one of the courageous and one of the confident girls who believes even if I'm fat, even if I'm thin, it's my body. I love myself. I love the changes, and you should appreciate because not everyone can go through the changes. So be happy if you're going through changes. आपकी ज़िंदगी में challenges आ रहे हैं, you should be thankful क्योंकि इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है कुछ. So डट के रहो. बहुत किया है. आज मैं जाके खाऊंगी जम के. मैं तो न्यूयॉर्क में भी मक्की की रोटी और दाल मखनी बनानी शुरू कर दी है, पर घर जैसा खाना कहीं भी नहीं मिलता. बट दिस इज़ हाउ इट इज़. आपको अपनी कंफर्ट जोन से कभी कभी बाहर आना पड़ता है अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो. सो थोड़ी हार्डशिप होती है कि मुश्किल लगता है मुझे कि न्यूयॉर्क में ऐसे खाना नहीं है, बट
it's okay. You know, you're doing so many other better things, so always have a positive outlook towards everything. Yes, ma'am. Um, I think being the youth of my country, and I'm a student of Masters in Public Administration, it's important to have your perspectives about anything that's happening around the world. And during that conversation, he was asking me a lot of related questions, and I was like, hey, ask me about my journey also, because I also have so many stigmas, stereotypes. You know, it's about pageant holder, it's about just looking beautiful. So that was something which I felt like, no, I need to speak about that, because anyway, the girls are getting targeted. And there are so many people who say that you are supporting hijab. And I think I just gave my perspective to it. And in the end of the day, if that girl is dominated by the patriarchy system, or if that girl is wearing hijab, that's her choice. Even if she's getting dominated, she needs to come and speak. Unless she doesn't support herself, how can I support her? And that's her choice, then that's her choice. Let her live the way she wants to live. So in both ways, she needs to come and speak about that. It's my choice, or I'm getting dominated, and I need to stop. And I'm there to support. And that's all about, because we are women of all colors. We are women of different cultures. We need to respect each other. Let them live the way they want to live. And I think we all have different lives, so why do you want to pressurize somebody and dominate somebody else? That's all what I think. Perspective, I said. Everyone has different perspectives, and we should respect. Thank you. It does build a lot. I think what really changed after winning Miss Universe, me as Harnaaz is the same. Thodi choti ji, pyari ji, kudi is the same. But my vision has been clear. I have been more confident about what I need to do. And people have a lot of expectations with me. And I think that's genuine. Because not everybody gets the opportunity to speak, to sit, to be the voice, and to spread awareness and break stigmas. So I'm really thankful and grateful to be sitting here and talking with all of you, and to make sure that whoever is still struggling with those stigmas, we need to break it together. आई थिंक मैंने सबसे पहले मेरा फोटोशूट फरवरी में हुआ था फादिल के साथ. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर्स इन द वर्ल्ड. तो उनके साथ मैंने अपना न्यू फैशन देखा, न्यूयॉर्क फैशन मैंने स्टाइल देखा कि मैं ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ. सो आई थिंक न्यूयॉर्क जाने से मैंने ये एक्सप्लोर किया कि ग्लोबली फैशन कैसा है और हम कितने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. वहाँ पर जाके भी मैंने काफ़ी इंडियन डिज़ाइनर्स डाले, साड़ी भी डाली, and it was really nice. And काफ़ी फोटोशूट्स किए, आगे भी it's going to be very experimental and beautiful. मुझे काफ़ी अच्छा लगा. पहली बात तो sharing the stage in Delhi, the capital of India, and that too with Shivan and Naresh. They have been really close to my heart क्योंकि वो jury panel में थे मिस टीवा के टाइम पे. और this was my first showstopper moment as Miss Universe. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और स्पेशली मैम बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में जो मैम ने क्वेश्चन पूछा, सो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग फॉर मी. आफ्टर बॉडी पॉजिटिव के बाद मैंने पहली बार लैक्मे फैशन वीक पे ऐसी ड्रेस डालकर वॉक किया. सो इट वॉज नॉट ओनली एम्पावरिंग अदर्स, एम्पावरिंग माई सेल्फ विद इन to accept the change, because I know in the end of the month, year, or whenever, I will get back to shape. I need not to prove anyone. I need to prove myself, and I'm happy. I love myself, respect my body, and I'm grateful to have a great body. सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने पहना है क्राउन. और वो क्राउन इज
respect. The crown is courage. The crown is voices of so many people who are voiceless right now. And the crown is breaking stigmas. तो इतनी responsibilities हैं यार. वो जो Miss Universe उन सबको लगता है it's about being perfect. It's not that. We all are imperfect and we need to embrace that. So there's so many responsibilities. I think सबसे बड़ी responsibility है universe की. तो I hope मैं अच्छे से निभाऊँ. कॉलेज की शुरुआत की 2017 से. हाँ जी. तो कॉलेज का किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा, टीचर्स का किस तरह का सपोर्ट रहा, वो आज भी आपको याद करते हैं, तो किस तरह का उनका रहा, थोड़ी जैसे उनकी बोलना है, हाँ जी. बिल्ली की आवाज़ निकालना, मोमेंट्री करना, वो बहुत बढ़िया थी आपकी. तो वो कैसा रहा और आप आज उनको अपने साथ डिस्क्राइब करते हो, लगता है आपको कि उनकी बदौलत आप यहाँ तक आए हैं? टीचर्स ने मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. वो कहते हैं ना जैसे वो आपके सेकंड पेरेंट्स होते हैं, तो मेरे लिए हमेशा वैसे ही रहे हैं, मेंटोर्स, प्रोफेसर्स. तो हाँ जी, मैंने 2017 में मैंने अपनी बैचलर्स शुरू की थी और मैं थिएटर आर्टिस्ट, मैंने जो अपनी थिएटर की जो क्लासेस है मैंने वहाँ से एक्सप्लोर किया कि मैं एक एक्टर भी बन सकती हूँ, मुझे इस चीज़ का शौक है. और वहीं से मैंने रैम्प वॉक स्टार्ट किया अपना, जब मैं जस्ट 17 ईयर्स की थी. और मुझे याद है जब मैं मिस डीवा में थी और मैं प्रिपेयर कर रही थी, मैंने टैलेंट अपना शो किया था एज मिमिक्री. तो मैंने मिमिक किए थे जजेस. तो मुझे याद है जब मैं आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मिस डीवा, सो माई मेंटोर सुप्रीत बेदी, उन्होंने मुझे कम्युनिकेशन के वो स्किल्स सिखाते थे. तो उन्होंने मुझे कहा था कि तू मिमिक्री करना और कैट की करना. तो मेरे को पहले लगा सो ऑकवर्ड, बट इन दैट वे आई थिंक आई गॉट टू broke so many stigmas, and I did that in the interview, personal interview. और मुझे नहीं पता था कि वो स्टेज में भी मुझे एक क्वेश्चन पूछेंगे. और जब मुझे पूछा तो, और स्टीव के साथ खड़े होके जो स्पॉन्टेनियस पर्सनालिटी है, तो मैंने कहा अब मौका मिला है तो अपना टैलेंट शो करो, क्योंकि मेरे टैलेंट ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं उसको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूँगी. सो आई एम थैंकफुल कि मुझे मौका मिला कि मैं कुछ लोगों को हंसा सकूँ और स्टिग्मास ब्रेक कर सकूँ कि ब्यूटी पैजेंट में ये नहीं कि आपको बहुत परफेक्ट आंसर देना चाहिए. Thank you. I'll say one thing. हाँ जी. You are so gorgeous, of course. I don't know what else to mention that, but your energy is so beautiful. I can actually feel so connected from here. But you know, लोग सारे बात करते हैं कि हमको सोसाइटी में चेंज लेकर के आना है. हाँ जी. That means कुछ भी चेंज लाने के लिए सबसे पहले खुद में चेंज करने की जरूरत है. What do you think a person needs to change in himself or herself? हाँ जी. You know, for society at large. बिल्कुल, absolutely. The change starts from within. And if you want to change the system, if you want to change something about anything around you, you need to be in that system. But only if you are empowered within, then only you have the perspective. Then only you are confident about what you say and you know that this is me and I'm authentic and I have people to support me. So starting हमेशा मुश्किल होती है, but impossible नहीं. And I think वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे. एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है. I think you asked a very valid question. This is true. Like my family was there to support me, so I think they saved me a lot to feel protected. पर मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों को स्पेशली इस इंडस्ट्री में अगर आना चाहिए तो they need to treat themselves the way they want people should treat them. अगर आप अपने आप को कमज़ोर ट्रीट करोगे तो लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे. If you are strong enough and confident enough to represent yourself, people will talk to you accordingly and they will think so many times for asking you anything. So you need to have that ज़िद्दी दिल, जज्बा, वो strong representation of personality, वो आपको अपने आप रखनी पड़ेगी. You need to be very strong from within and that's how people are going to perceive you. So. Oh my God, सबसे मुश्किल टाइम तो आई थिंक मेरी मिस डीवा ऑर्गेनाइजेशन को पता है. सिर्फ 30 दिन थे हमारे पास प्रिपेयर करने को और बहुत प्रेशर था, बहुत ज़्यादा फिजिकल मेंटल प्रेशर, इतना ज़्यादा. आई थिंक मैं सुबह 3 बजे उठती थी और रात के 12-1 बजे सोती थी 30 दिन के लिए. मेरे साथ पूरी टीम भी, मैं तो ये कहूँगी मैं फिर भी 1 घंटा 2 घंटा सोती थी, मेरी पूरी टीम सोती नहीं थी.
पर मेरे अंदर वो था कि मैं करना चाहती हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, क्योंकि मेरे साथ इंडिया का नाम जुड़ चुका है और मैं नहीं चाहती कि जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ ऐसा उनको लगे कि शी इज़ नॉट सीरियस, और ऐसा है इंडिया जो नहीं है। इंडिया इज़ सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, इट्स अ डाइवर्स कंट्री, और कितने कल्चर्स, और आप सबको रिप्रेजेंट करने का वो जो आँख थी मेरे अंदर, तो आप सबका प्यार था। So that's why I never gave up. So that was the most difficult time of my life, I think, along with my health. जो gluten ये सब नहीं खा सकती थी. So it was kind of very challenging for me. But with your love and support, I never gave up. हाँ जी. ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इतना अच्छा लगा उन सबके साथ मिलकर, मनोज जी से मिलकर, बादशाह, शिल्पा शेट्टी, करण खेर मैम, उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे उनके साथ मिलकर. आई वाज फीलिंग रियली हैप्पी एंड इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू मीट देम इन पर्सन एंड टू लर्न सो मच. So it's nothing like that. I think people just they don't know what's actually happening. जो सोशल मीडिया पे हम दिखाते हैं वही सब कुछ नहीं होता है. So ऐसा कुछ भी नहीं है. It's just I don't know why people say that. It's so warm. अभी नहीं मिला, but I'm really looking forward to meet her. वो भी अपनी लाइफ में कितने busy हैं अभी. But I think looking forward to meet her. I live in Manhattan, so that would be a great feeling, and I think I really can't wait to meet her and learn so much. I think मैं इंसान ही बनना चाहूँगी in the end, क्योंकि कभी कभी आपको एक इंसान बन के भी सोचना चाहिए. Like it's not only about मिस यूनिवर्स है, हरनाज एक इंसान भी है, और वो एक इंसान हो कि कैसा सोचती है सोसाइटी के लिए, वो बहुत ज़रूरी है. सो अगर इफ गिवन अ चांस, आई वुड लाइक टू बी अ ह्यूमन बिफोर एनीथिंग एल्स. ओके, इन दैट वे आई थिंक IAS ऑफिसर. That was my plan B anyway. हाँ जी. हाँ जी. ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲੀ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ. ਚਲੋ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨ ਜਨਰਲ. ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ आई लुक एट द अदर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस सिचुएशन. आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका मिला, क्योंकि सबको नहीं मिलता ये मौका, तो इसको एम्ब्रेस करना चाहती हूँ. और ये जो अटेंशन है, ये जो इतना प्यार है, उसको मैं अच्छे से अप्रिशिएट करना चाहती हूँ. सो कभी मुश्किल होता है, बट आई एम हैप्पी इन द एंड ऑफ द डे कि हाँ ठीक है, कितने होप्स है सबको. सो दिस इज़ द टाइम टू शाइन एंड मेक थिंग्स हैपन. एंड द गर्ल्स इन पंजाब, आई थिंक मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं करके दिखा सकती हूँ तो आप भी करके दिखा सकते हो. मैं वहाँ हूँ जहाँ आपको मेरी सपोर्ट है. बस इतना ही चाहते रहो फटे, एंड डरना नहीं है, and do what you believe in, because this is your life. Make it happen. Thank you. I think, and I share my personal story, how my mom broke the patriarchy system by being a gynecologist, how I, after winning the beauty pageant, broke the stigmas regarding that, and how I went to represent this beautiful country, met incredible women from all around the world, from all around the cultures, and women of all color. I realized that it takes a lot of courage to bring that one difference, and we are here with one motive. So feminism is a different term. Women empowerment is a different term. And I talk about women empowerment not because कि हम
एक कंपटीशन है हमारा मेन के साथ. We want men to support us. It's about respect and it's about equity. We need everyone to be treated equally, not as genders, as humans and as skills and as emotions. So feminism is totally different. I never ever touch that thing because I don't believe in that. I believe in women empowerment, empowering individuals. Thank you. Okay, I can't hear both of you. हाँ जी, I think आज CM सर से मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर. So I'm really looking forward कि मैं पंजाब के लिए क्या क्या कर सकती हूँ. So it's unlimited and there's so many things regarding drugs, menstrual equity, women empowerment, and we can do so many incredible things. So definitely I need you guys to support. Thank you. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੱਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਾਪੜ ਤੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ. चंडीगढ़ में आई थिंक काफ़ी कुछ खुल गया है. 6 महीने हो गए मुझे, बट चंडीगढ़ में आई थिंक मैं मम्मा के हाथ के खाना दिखाना चाहूँगी और थोड़ी और मे बी सेक्टर 17 इधर. मुझे मौका नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ, पर अगर मुझे मौका मिलता मैं सेक्टर 17 जाती, 35 जाती, एक्सप्लोर करती. थैंक यू. पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावां, पंजाबी साडियां बावां. ABP सांझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते. ABP सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो. ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून.